I'm your host Ilyas Bulbulia and I'll be with you for the next hour. As our regular viewers are aware, on Just Law we normally discuss an area of law which is of interest to you, our viewers. And secondly, and more importantly, it's a live show, so you can call in and ask us any questions that you have on any aspect of the law. On this show, we should be able to cover matters as diverse as immigration matters, family matters, criminal matters, personal injury matters. So whatever your question is relating to English law, please do pick up the phone, give us a ring, and inshallah we should be able to give you some guidance in relation to that. Just a couple of points before we get going. Obviously it's a live show, so we're not able to look at your documents. If it's the case that I need to look at your documents, then I'll ask you to send your documents to me, and then I can have a discussion with you off air in relation to that. And obviously because it's a live show, we can't take too many detailed instructions from you live on air. If it transpires that I need to speak to you in a lot of detail off air, then indeed I'll ask you to leave your number and we can have that discussion after the show. But in my experience, in the vast majority of cases, if you do call in, I should be able to deal with your query live on air. MashaAllah, we get a lot of questions on immigration matters, which is fantastic. But whatever your questions relate to, whether it's immigration or whether it's any other aspect of English law, please do pick up the phone and give us a ring. The number that you can call on will be appearing at the bottom of your screen. Now, as always, what we tend to do is pick a topic that we can talk about in relation to a topical matter. Then I normally explain that area of law, but obviously today I've picked an area which again it's related to immigration matters. But having said that, if your query relates to any other matters, doesn't necessarily have to be restricted to what we're dealing with today. Whatever matter it is, you can pick up the phone and give us a ring and we can have a discussion about your query. Now, over the last couple of weeks we've looked at how you can make an application to come to the United Kingdom as the husband or wife of somebody who is settled in the United Kingdom, your typical spouse application to come to the United Kingdom. We've looked at the various requirements that need to be fulfilled. We've looked at how we demonstrate the financial requirement, the 18,600 requirement that no doubt you've heard about. We've looked at the accommodation requirements. We've looked at how the marriage and the relationship is demonstrated. And also I think last week what we looked at was how there are different circumstances in which the evidential requirement relating to the finances, how they differ and how they are fulfilled, such as if you're self-employed, the kind of documents you need to submit in order to meet the financial requirements. So we've done that. So let's assume somebody has been successful, they've managed to get their visa to come to the United Kingdom. What I want to do today on this show is to look at how you extend their visa in the United Kingdom. Because as our callers who might have gone through this situation will be aware that where somebody comes to the United Kingdom as a husband or wife, they are normally granted a 2.5-year visa to come to the United Kingdom. And the way it now works is that initially in India, Pakistan, Bangladesh, whichever country you're in, the way it now works is that you would be granted in your passport a visa which has a validity period of 1 month. So the sticker that will be placed in the passport will be valid for 1 month. So if it's granted today, it might say from the 2nd of July 2018 to the 2nd of July, to the 2nd of August 2018. So it will give 1 month for the person who is abroad, the husband or wife who is abroad, to travel to the United Kingdom. Now, it used to be different many years ago. The way they used to work is that previously they used to grant a 2.5-year visa within the passport. So in the passport, the validity dates would be for 2.5 years, or should I say 2.5 years plus 3 months, which actually used to be the practice. And then it would mean that somebody would come to the United Kingdom during that duration, and they would then apply for their extension at the expiry of that visa. Contrast that with what we have now. What we have now is that in the passport, the period for which the visa is granted, as stated in the passport, is just for 1 month. So that's the date, that's the period within which
the husband or wife who's abroad needs to travel into the United Kingdom. The reason that it's been done that way nowadays is because the UK government has introduced biometric residence permits for the vast majority of visa holders. So what they want is not for the visa to be confirmed or stated in one's passport, but they want evidence of somebody's visa to be actually on the biometric residence permit. The Home Office view is that that's a more safer way, that's a more secure way of sort of confirming somebody's right to be in the United Kingdom. They feel that visas within passports are more easily tampered with. So if you don't have that system, you have somebody with a visa card, a biometric residence permit, at least that's it's a card that's there, it's more secure and less likely to be tampered with. So the system that we now have is when somebody gets a visa, they will get a 1 year visa as stated in the, a 1 month visa as stated in the passport, and then after that they will come to the United Kingdom and then they will get a biometric residence permit, which will be for the full duration of 2.5 years, for the duration of the first grant of the visa. Now, the process for getting the actual biometric residence permit is actually quite simple. If we go back to when the initial spouse application is made, when the husband or wife who's applying for a visa, when they complete the online application, once that application is submitted, at the end of the form it will normally tell you where the biometric residence permit is to be collected from. And indeed, when you get the visa in your home country, you'll get a letter saying, look, you've got your visa, it's actually for 2.5 years, although the passport refers to only a 1 month validity date, but the biometric residence permit, which will actually confirm your status in the United Kingdom, that is to be collected from a certain place. And that place is normally the local post office. So for example, if somebody is in, for example, Yorkshire, the local post office may well be in Leeds, in the Huddersfield, etc. In London, London has its own post offices where biometric residence permits are collected. And all that's required is for the person who's been granted the visa to come to the United Kingdom, they take their passport and their letter which says you've been granted the visa along to the post office, hand it in. They will have received your passport already. They will look for your passport and they would have received the biometric card, I apologize, already. They will look for your biometric card and hand you the biometric card. So at that stage, you've got your old passport there with the old sticker that's been placed, what you used to travel to the United Kingdom, and you've now got this biometric residence permit as well that's been given to you at the passport, and it's been there waiting for you to collect it. So that's the system now, and it's the biometric residence permit that will confirm the duration of the visa. And it's important that you keep that in mind, that once you've got your visa card, keep in mind the expiry date of the visa, because obviously when the extension application has to be made, that's the date within which the extension application has to be made. There are real difficulties in terms of one's status or one's ongoing immigration status if you were to miss that date by which the visa has to be extended. Now, in terms of extensions, before we go on to deal with what the law says about extensions, just on that point, what I should say is that the application for an extension should be made either on the day or before the visa expires. You're entitled to apply before the visa expires, but the application should be made no more than 28 days before the visa expiry date. So, you know, there's a window within which the application is to be made. It's 28 days before the visa expires up to actually the last day on the date that the visa expires. So for example, if the visa expires today, you know, if it expires, let's say for example the 1st of July 2018, you can actually apply on the 1st of July 2018. I wouldn't advise that you do that, but you know, if there is a problem, you can actually apply on the last day that the visa expires, assuming
that it is a day that the post office is open and when you can submit your application to the post office. So that's the sort of background to where we are. You know, somebody has been granted a spouse visa, it is valid for 2.5 years, they've come to the United Kingdom, they've gone to the post office and they've collected their biometric residence permit. So fantastic, up to there, all well and good. You know, the key thing, which is to get them a visa to come to the United Kingdom, that has certainly been, that key requirement or key aim has certainly been fulfilled. Now that they're in the United Kingdom, what do you now do in order to ensure that come 2020, 2021, whenever it is, when this visa is going to expire, how do you ensure that the visa can be successfully extended so that somebody can then continue living in the United Kingdom? Because obviously at the 2.5 year mark, all you can do under the current rules is to extend your visa. You aren't able to apply for indefinite leave to remain at this stage. It's only at the 5 year mark that you apply for indefinite leave to remain. So after 2.5 years, all that you're doing is applying for an extension of your visa. So how do you go about it? Well, we've talked about when the application is to be made. There are a number of different ways in which the application can be made. So let me just look at that before I deal with the specific requirements that need to be fulfilled. First of all, the sort of normal or the standard way of doing it, which in my experience 90% of the people do, which is to complete a visa application form. You make sure you get the right form. For spouse extension, it's a form called FLRM. So download the form from the Home Office website, complete the form, make sure you meet the requirements, and I would advise that you take legal advice on it before you submit it, because although the form might look straightforward, there are a number of complexities within that and possibilities of the application going wrong. So I'd say take advice on it. But it's normally, in the 90% of cases, an application form will be completed, the relevant documents will be attached, the fee will be paid, and it will be submitted in the post. That's the normal way of doing it, but there are 2 other ways of making an application as well. The other way of doing it is, instead of submitting an online form, you submit, instead of submitting a paper form which is printed off, you submit an online form. Now the thing with the online form is, once the online form is submitted, it then gives you 21 days to submit your actual documents to the Home Office. So initially the online application is submitted, it's paid for, and it goes to the Home Office. They then give you some additional time to submit a hard copy of the form that you've completed online and the supporting documents to the Home Office. So that's the second way of making the application. One is the standard postal application where you've filled in a hard copy of the form and you've submitted it. The second is the online form that's been completed and which you do still have to print off and submit to the Home Office with supporting documents. But once a normal once a normal application form, the other is the online form. The third way of doing it is to make an appointment directly with the Home Office, and that's a premium appointment which is made with the Home Office, and with that appointment the application is decided on the day. With that application, I'll deal with the last one in greater detail after we've taken one of our calls for the day. Hello, assalamu alaikum. Walaikum salam. जी वादी भाई, thank you for calling. जी, what's your question? Yeah, मेरा नाम इस्माइल है जी, okay. Okay. मेरा सवाल ये है कि अगर कोई आदमी, कोई लड़का 400 पाउंड पर भी कमा रहा है जी, और एवरी वीक वो बैंक के अंदर पैसा रख रहा है, एवरी मंथली, okay, okay. क्या उसको राइट है कि वो उसको स्पेंड भी कर सके, या उसको कितना पैसा अमाउंट रखना चाहिए बैंक के अंदर? जी, इसमें रियली 2 इश्यूज है. एक तो जो पैसे बैंक में वो डाल रहा है वो एग्जैक्ट होना चाहिए. जो वेज स्लिप पे जितने भी वो नेट पे का जो फिगर है वेज स्लिप पे,
इतने पैसे उसको एग्जैक्ट बैंक में डालना पड़ेगा एंड ऑन टाइम डालना पड़ेगा। सो फॉर एग्जांपल अगर किसी का नेट पे है 330 पाउंड्स एंड 10 पेंस, उसका नेट पे है, तो उसको बैंक में डालना पड़ेगा 330 पाउंड्स एंड 10 पेंस, एग्जैक्ट डालना पड़ेगा और वो टाइम पे डालना पड़ेगा। वीकली पे है तो हर वीक उसको डालना पड़ेगा, मंथली पे है तो हर एवरी मंथ ऑन टाइम उसको डालना पड़ेगा। सो दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। और इसमें केयरफुल ये रहना है कि समटाइम्स वेज स्लिप्स वीक बाय वीक और मंथ बाय मंथ उसका जो नेट पे है वो थोड़ा सा समटाइम्स इट चेंजेस। सो वन वीक इट माइट बी 330 पाउंड्स एंड 10 पेंस, नेक्स्ट वीक इट कुड बी 330 पाउंड्स एंड 20 पेंस। वो टैक्सेशन जो डिडक्शंस होता है, टैक्स डिडक्शंस, इसे समटाइम्स दैट वेरी। सो फर्स्ट बात तो ये है कि राइट अमाउंट बैंक पे डालना पड़ेगा। सेकेंडली देयर इज़ नो प्रॉब्लम, बैंक में से पैसे निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे तो ऐसा कोई रूल भी नहीं है कि सब पैसे नहीं निकाल सकते, मगर इसमें सिर्फ आपको थोड़ा सा केयरफुल इसलिए रहना चाहिए कि उसको ये ना लगे कि ये कोई जॉब फेक है और जो भी पैसे आते हैं वो आप निकाल के उसको ही वापस डाल देते हैं। सो बेटर के टोटल पैसे ना निकाल दें, मगर कोई रूल तो ऐसा नहीं है कि आप पैसे नहीं निकाल सकते। उसका रूल ये है कि पैसे एग्जैक्टली ऑन टाइम बैंक में जाना चाहिए, वो उसका रिक्वायरमेंट है। निकालने के बारे में उसने कुछ नहीं लिखा नहीं है। माई पर्सनल व्यू इज़ दिस कि पैसे निकालना है। फॉर एग्जांपल किसी ने 300 पाउंड डाला तो निकाल दो 250 260, क्योंकि उसका खर्चा के लिए तो उसको पैसे चाहिए ना, तो निकाल सकते हैं। तो सब पैसे ये ना करो कि मंडे को पैसे डाले और ट्यूसडे को सारे पैसे निकाल दिए, डोंट डू दैट। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ कर, जी थोड़ा सा पैसे निकालो। जी 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 एक और सवाल है। जी ठीक है। जी जी एक और सवाल है, क्या जब वो एप्लीकेशन करता है 6 मंथ्स के बाद, 6 हफ्ते के बाद, 6 मंथ्स के बाद, जी, उसके पहले वो एप्लीकेशन नहीं कर सकता है? अब इसमें वेरी लिमिटेड सर्कमस्टांस उसमें पहले कर सकते हैं। 3 मंथ्स के बाद। जी, प्रॉब्लम क्या है कि वो लड़की जो है उसने पास किया हुआ है टेस्ट ऑलरेडी। जी समझ गया। लेकिन उसका 2 साल फिनिश होने वाला है दिसंबर। समझ गया, जी समझ गया। वो जो 3 महीने में अप्लाई कर सकते हैं, मगर वो लोग कर सकते हैं जो ये जॉब में 3 महीने उसके हो गए, इससे पहले भी उसके पास जॉब था, इसमें 9 मंथ्स हो गए, तो अगर दोनों जॉब्स मिलाकर उसके पैसे इनफ हो जाते हैं तो वो अप्लाई कर सकता है। अगर किसी ने पहले काम ही नहीं किया, ये नया जॉब शुरू किया और ये नया जॉब में 3 मंथ्स हुए, वह तो जनरली नहीं कर सकते। एक और एक्सेप्शन है जिसको डिसेबिलिटी बेनिफिट्स भी मिलती है, तो वो लोग कर सकते हैं। उसको 6 मंथ्स कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है। पर हमारे जो केसेस होते हैं 99% ऑफ केसेस न्यू जॉब्स होते हैं, पहले के जॉब्स में कोई रिकॉर्ड्स अच्छे नहीं होते हैं, तो फिर वो नया जॉब लड़का या लड़की जो भी है वो नया जॉब शुरू करता है तो उसको 6 मंथ्स वेट करना पड़ता है। वो टाइम में अगर किसी के टीबी सर्टिफिकेट या इंग्लिश सर्टिफिकेट अगर एक्सपायर हो गई तो फिर उसको दोबारा रिपीट करना पड़ेगा वो। अच्छा जी। और अगर वो एप्लीकेशन करता है, जी, अगर वो एप्लीकेशन जब करता है 6 मंथ्स के बाद, क्या उसके बैंक में कुछ पैसे होने चाहिए उस वक्त, कुछ डिपॉजिट या एक्स्ट्रा पैसे बैंक में रखने चाहिए? जी जी। तो इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है सेविंग्स की। अगर जो उसकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है कि 18,600 आपकी अर्निंग्स होनी चाहिए, अगर वो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट आप सिर्फ इनकम से सेटिस्फाई करेंगे कि उसकी जॉब ऐसी है जहाँ से उसके पैसे बन जाते हैं, आप सेविंग्स पे रिलाई नहीं कर रहे हैं, तो सेविंग्स बैंक में होना कोई ज़रूरी नहीं है। बट आज कॉमन सेंस की बात है कि अगर किसी को इतने पैसे मिलते हैं 18,600, हर हफ्ते के उसके बैंक में 350 पाउंड्स जा रहे हैं, तो थोड़े से पैसे अंदर में होने चाहिए। 1000 पाउंड, 1500 पाउंड्स ऐसा होना चाहिए, जिस मेक श्योर कि ओवरड्राफ्ट में ना हो जाए। क्योंकि यह ना हो कि फिर वो देख के उसको लगे कि ये तो सारे पैसे स्ट्रेट अवे निकाल देता है, उसके बैंक में भी कोई पैसे नहीं है, तो उसको ये ना लगे कि ये जॉब जो है ना ये रियल जॉब नहीं है, ये कोई शाम है, ये कोई ऐसा ही बताया है उसने, जॉब पैसे निकाल देते हैं, वो पैसे सर्कुलेट हो रहे हैं, इसलिए ये आदमी के पास बिल्कुल कोई बैंक में पैसे ही नहीं रहते हैं। तो ये टू अवॉइड दिस सस्पिशन कि ये ऐसे ना सोचे, इसलिए मैं कहता हूँ कि पैसे निकाले तो थोड़े से रहने दो अंदर में पैसे, और थोड़े से सेविंग्स अगर किसी के पास है 1000 पाउंड 1500 पाउंड तो वो बेहतर है। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे जी नो प्रॉब्लम है, थैंक यू फॉर योर कॉल। अच्छा एक और बात थी। जी जी ठीक है। एक और बात थी जी। अच्छा वो जो
अगर वो लड़की ने जो 2 साल फिनिश हो जाते हैं तो क्या उसको रीअप्लाई करना पड़ेगा, वो रीस्टडी करनी पड़ेगी? जी, तो उसकी जो मैंने पहले जो शो शुरू हुआ ना, तो जो बता रहा था ना, उसको जो वीज़ा मिलेगी वो 2.5 ईयर की वीज़ा मिलेगी। तो 2.5 ईयर्स की जो वीज़ा मिलेगी ना, तो वो टाइम में आपको 3 थिंग्स याद रखना है, 3 थिंग्स। एक तो उसकी जो इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है, तो वो इंग्लिश का टेस्ट दोबारा उसको करना पड़ेगा। अगर उसने यहाँ आके जी अच्छा जी, तो अगर उसने इंडिया पाकिस्तान जहाँ भी है वहाँ A1 इंग्लिश का टेस्ट किया, तो यहाँ आकर जब एक्सटेंशन के लिए वो अप्लाई करेगी तो उसको A2 का जो टेस्ट है वो यहाँ देना पड़ेगा, करना पड़ेगा और पास करना पड़ेगा A2 का टेस्ट। एक वो याद रखना है। सेकंड ये याद रखना है कि जो इनकम पहले बताया वीज़ा लेने के लिए, तो वो सिस्टम दोबारा एक्सटेंशन के वक्त भी होगी। 6 मंथ्स वेज स्लिप, 6 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट्स काम होना चाहिए, 18,600 की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल करना है, तो वो दोबारा एक्सटेंशन के वक्त भी वो करना होगा। ये सेकंड बात होगी फाइनेंसेस की, इंग्लिश फाइनेंसेस। थिर्डली, रिलेशनशिप के जो डॉक्यूमेंट्स है उसको बताना है कि 2.5 ईयर्स ये दोनों हस्बैंड वाइफ दे आर लिविंग टुगेदर। तो उसके लिए स्टार्टिंग से आपको जो भी बिल्स उसके नाम पे आते हैं, जो भी कोई कागज़ उसके नाम पे आते हैं, जो भी बैंक स्टेटमेंट्स आते हैं, डॉक्टर्स के लेटर्स आते हैं, बेस्ट ये है कि पहले से ही आप उसको कलेक्ट करते रहो। वो लड़की के लिए भी और जो आपका लड़का यूके में है उसका भी कलेक्ट करते रहो। तो जब एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करेंगे और जब वो मांगेंगे प्रूफ कि आप दोनों रहते हैं सेम एड्रेस पे, तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपके पास वहाँ ही रेडी होगा कि ये सब बिल्स है, डॉक्टर्स के लेटर है, बैंक स्टेटमेंट्स पे सारे 2 इयर्स 2.5 इयर्स के रिकॉर्ड है, ये सब यहाँ रेडी है। 3 चीज़ आपको याद रखनी है। एक तो इंग्लिश का A2 टेस्ट होगा, सेकेंडली इनकम रिक्वायरमेंट भी फुलफ़िल करनी होगी, एंड थिर्डली रिलेशनशिप का जो एविडेंस है वो भी आपको कलेक्ट करके आपको देना पड़ेगा। तो एक्सटेंशन के लिए ये 3 थिंग्स इम्पोर्टेंट है। अगर पहले से ही आप उसको आपके फोकस करें तो इंशाल्लाह एक्सटेंशन के वक्त देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद दैट एट ऑल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। नो प्रॉब्लम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। थैंक यू फॉर कॉलिंग। Now we'll take our next call. Sorry about that. We'll take our next call. Hello. Hello. जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी भाई, थैंक यू फॉर कॉलिंग जी। Yeah. My name is Adi. Hi Adi, hi. Yeah. Hi Adi. I was refused on surrender sign. Right, okay. And the wording was that my British sponsor not worked when she came back. Okay, all right, okay. So I was given right to appeal. Okay. Did she? Right. Okay. And did she? Because I think we've discussed this before. Did she not? Was she working at the time? Was she working at the time of the application? She just started work last week now. Okay. All right. So I don't know the appeal. If I need to appeal, will it come through, or will I need to apply for another resident card instead of permanent resident? Have they granted you a normal residence card, a 5-year card at all, or not? Yeah, I have a 5-year resident, but it has expired now. Okay, all right. Okay. I applied for the permanent resident. Okay. But the permanent resident was refused. I understand. So they're saying she wasn't working for the duration after she came back to the UK. She didn't continue working. No. But I think there is an argument there that rule was only introduced later on. But did she start working later on? I think it was November 2016. 16 it was introduced. Yeah. So was she working from then after November 2000? No. All right. Okay. Because that time my last baby was 1 year old, so I wasn't able to work. Okay. So when did she start working again then? Last 2 weeks now. I understand. But we received the letter on Friday. So when you came back to the United Kingdom, did your wife work at all when you came back to the United Kingdom? No, you didn't work at all. Was she expecting a baby at that time at all, or was that later on?
It was later on. Okay, so last 2 years now. so we can't. My last baby was 2 years old now. All right, so we can't argue that because you came back to the UK, she was on maternity leave, and that's why she couldn't work. We can't argue that from what you're saying. When she, so we can't. No, the I'm saying appeal will not go through. I think there are a couple of arguments that we need to look at. One is whether we can argue that when she came back, she was pregnant and therefore on maternity leave, and therefore she wasn't required to work. So we need to look at that. The second argument, it's a weak argument, is that you were a self-sufficient person. You were a self-sufficient person. Were you working at the time? Yeah, I was been working since 5 years. Immediately we came back. Well, did you have sickness insurance from when you came back, from November? The sickness insurance was bought just February. And you know the services, what is it called, was introduced in 2016. But did you? So I was unaware until February this year. So sorry, you didn't have insurance until February of this year. You didn't have it? No, we bought the insurance before submitting. I bought the insurance. Right, I okay. submitted the insurance. I understand. But the insurance does not happen at the same time. I understand. Yeah. Okay. See, at the moment, even if you argue you're self-sufficient, the problem is they're going to say you need comprehensive insurance from November 2016, from when the rule was introduced. So we're going to have some difficulty there as well. I think, you know, what might be an idea is to try again without comprehensive insurance when the new scheme comes in. You know, the new scheme for settled status that was announced about a couple of weeks ago in greater detail, when they were saying you don't need comprehensive insurance if you're in the UK, either as a European national or the dependent of a European national. It might be worth, maybe no point appealing now, might be worth trying to reapply later on, and at that stage arguing that, okay, you no longer need comprehensive sickness insurance, so that requirement isn't a problem. And then in terms of employment for your wife, the British citizen who's come back, arguing that you were a self-sufficient person from November 2016 when the requirement came in, and therefore you shouldn't be penalised, and it doesn't require your wife to be working. I think personally, maybe it doesn't sound like it's going to be worth appealing. It might be worth a try reapplying after the new rules come in, when there's no requirement for comprehensive sickness insurance. Okay. It's very unfortunate. What about if I need to reapply for repeat the resident card again? That's not a problem. For that, all you need to show is that your wife is working now. That's all you need to show for that. So that's not. How many payslips will I have to send along? Ideally 3 months. Ideally 3 months. It's more likely to go through if we can put about 3 months wage slips in. But you can try even after 2 months, it's not a problem. Ideally, I tend to just, as a matter of good practice, submit an employment letter, 3 months wage slips, 3 months bank statements, and then based on that, you're able to get the residence permit for 5 years. Do that, let the law change, and let this settled status or the revised rules for European nationals or those who are under Surrender Singh route, let that revised law come in, and then try again to apply for permanent residence at that stage. Okay, I think I was thinking it's going to be around September. Yeah, it's going to be around September, and they're going to introduce something which is more flexible. Let's look at that and try your luck then. But before that, if you want to get the 5-year card, you can do that. It's not a problem. You can do that now. Okay. No problem. All right, Adi, thank you very much for your call. Thank you very much for your call. We'll take our next call. Hello, Assalamu alaikum. Hello. Hello, Assalamu alaikum. Thank you for calling. हाँ जी, मैं ना पूछना सीगा कि मेरी फ्रेंड आ, उन्होंने मम डैड आए ਨੂੰ 11 साल हो गए जी, okay. तो उन्होंने कितनी बारी केस लाया से रिफ्यूज हो गया जी, all right, okay. तो प्लीज ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ फॉर्म सारे दिखा लेना चाहते हैं, तो थोड़ा एडवाइस दे सकते हैं? जी, तो उसके यहाँ कोई चिल्ड्रन है अंडर द एज ऑफ 18 कोई है? किनके? जो पेरेंट्स है
जो यहाँ है 11 ईयर्स से, उसके कोई चिल्ड्रन है यूके में? उनके बेटी ने उनको मंगाया था। बेटी ने मंगाया था, मगर बेटी तो ओवर 18 होगी ना? हाँ जी, हाँ, उनके दोते हैं उनके पास राइट, ओके ओके, सो उसके 11 ईयर्स हो गए ना। वो थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज उसने अभी क्या किया है कि अगर उसने किसी ने ओवर स्टे किया यूके में तो वो 20 साल के बाद उसको वीज़ा देते हैं आफ्टर 20 ईयर्स। तो उसके लिए द बेस्ट सिचुएशन इसके अभी अप्लाई ना करो, डोंट, क्योंकि वो गारंटी रिफ्यूज़ करेंगे। अगर वो कुछ कर नहीं रहे हैं टू ट्राई एंड रिमूव देम, तो कुछ ना करो, रहने दो केस को, ये बेस्ट है। क्योंकि है ना, हाँ, क्योंकि उनका ना बेटा था 5 साल का, पहले जब शुरू किया था उन्होंने इसलिए किया था, तो वो 2 दफ़ा रिफ्यूज़ हो गया जी, जज ने रिफ्यूज़ कर दिया। आई अंडरस्टैंड। इसमें ना अभी जो करंट जो स्कीम है, जैसे अभी रूल्स है, गवर्नमेंट की जो अप्रोच है कि ओवरस्टेयर्स को वापस भेज दो, अभी इट्स क्वाइट स्ट्रिक्ट। अभी एक एप्लीकेशन डालना, फिर 2 बार एप्लीकेशन डालना, फिर नदर एप्लीकेशन डालना, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। ये असाइलम डालो, कुछ बेस्ट है अगर उसको जाना नहीं है वापस, जस्ट लीव थिंग्स एज दे आर। समटाइम्स फिर क्या होता है, अगर उसकी उम्र ज़्यादा है, वो ट्रैवल नहीं कर सकते, ये बहुत केसेस ऐसे बनते हैं कि उसकी उम्र ज़्यादा है, 60s में है, 70s में है, वो ट्रैवल नहीं कर सकते। अगर उसका ऐसा सिचुएशन है तो जब होम ऑफिस उसको कहते हैं कि हम आपको वापस भेजेंगे, तो फिर मेडिकल एविडेंस ले आओ कि लोग ये ट्रैवल नहीं कर सकते, उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, वो ट्रैवल नहीं कर सकते, अगर वो बीमार है तो वो भी एविडेंस उसको बाद में दे सकते हैं। मगर बार बार एप्लीकेशन डालने में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि काम नहीं होगा इसमें। बेस्ट है लोग, अगर होम ऑफिस ने कुछ, उसकी एज क्या है अभी पेरेंट्स की? 78 जो डैड की थे, 70 मॉम की जी। उसकी हेल्थ कैसी है अभी, मदर फादर? हेल्थ उनकी ठीक नहीं है। ऑलराइट, आप बेस्ट है ना ये सिचुएशन में अभी पैसे वेस्ट ना करो। कंटिन्यूस 1000 पाउंड, लॉयर का 1000 पाउंड देकर इसमें कुछ नहीं होगा। रिफ्यूज़ल पे रिफ्यूज़ल आएगा, पैसे आपके वेस्ट हो जाएंगे। इससे बेहतर ये है रहने दो उसको। अगर होम ऑफिस पुश करेंगे कि उसको वापस जाना है, तो फिर उसको डॉक्टर का लेटर भेज दो कि ये ट्रैवल नहीं कर सकते, उसकी हेल्थ ठीक नहीं है। होम ऑफिस कुछ नहीं करेंगे उसको। अभी 2 बार अप्लाई करना, 3rd टाइम अप्लाई करना, 4th टाइम अप्लाई करना, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है ना? तो अगर इन केस कोई अंदर प्रॉब्लम हुई तो अगर जी नहीं कर सकते उसको होम ऑफिस जनरली बिकॉज ऑफ द एज, 78 की किसी की एज है, तो जनरली स्पीकिंग होम ऑफिस वाले घर पे आकर उसको लेते नहीं जाएंगे ना। ये नहीं है ना कोई somebody who's 20 नहीं, वो 78 को ऐसे नहीं करते। वो नॉर्मली इसको कागज़ लिखते हैं, उसको कहते हैं कि चलो आप रिपोर्टिंग पे भी आओ, ऐसे करते हैं। 70 जो इफ़ somebody is in their 20, 30, 40, 50 तो उसका रिस्की होता है कि उसको आकर उठा लेंगे। मगर 78, 79 किसी की एज है तो उसको ऐसा नहीं करते। और ऐसा अगर कोई टाइम आया ना तो फिर वो एट दैट स्टेज वो ह्यूमन राइट्स का एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अगर उसको कोई ख़तरा है कि हम वापस इंडिया पाकिस्तान जो भी है नहीं जा सकते, कोई असाइलम का एप्लीकेशन, अगर कोई ख़तरा है उसको वापस जाने में, तो तब वो भी डाल सकते हैं। अगर वो ट्रैवल नहीं कर सकते तो वो टाइम पे होम ऑफिस को भी बता सकते हैं ये कैसे ट्रैवल कर सकेंगे, उसकी तो तबीयत ही ठीक नहीं है। तो ये सब तब करना चाहिए। अब यहाँ अभी करने से वीज़ा तक गारंटीड उसको नहीं देंगे ये लोग, गारंटीड नहीं देंगे उसको वीज़ा। मैंने तो कभी नहीं देखे कि ये गवर्नमेंट के अंडर में जो रूल्स है, मैंने तो कभी नहीं देखा कि ये लोग को किसी ने उसने वीज़ा दिया ये सिचुएशन में। तो अन्य डोंट पैसे वेस्ट ना करो, सीरियसली रहने दो। अगर आपके कहीं ज़रूरत पड़ी कि आपको फाइल दिखानी पड़ी तो कोई बात कर सकते हैं। हमारे ऑफिस से ड्यूसबरी में है, यहाँ से भी आपको नंबर मिल सकता है। कोई बात नहीं, हम कर सकते हैं। बहुत ऐसे केसेस होते हैं। माई एक्सपीरियंस इज़ के होम ऑफिस जनरली एट दैट एज व्हेन समबडी इज़ इन देयर 70s वो कोई फोर्स्ड रिमूवल ऐसा नहीं करेंगे। वो अगर कोई रिमूवल का प्रोसेस किसी ने शुरू किया तो देन वी कैन मेक रिप्रेजेंटेशंस टू देम, उसको बता सकते हैं कि ये रीजंस है इसलिए वो नहीं जा सकते। तो बेस्ट है कि वी डील विद इट दैट वे। ठीक है ना? Thank you so much. No problem है। Okay, चलो, thank you very much for your call. We'll take our next call. हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी भाई।
सर क्वेश्चन है वे जी मेरे बेटे की उम्र इस वक्त हैगी है 18 साल 4 महीने जी ठीक है ओके लेकिन एक तो 2 महीने पहला मार्च ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੀ शादी ਕੀਤੀ ਹੈ ओके ठीक है पाकिस्तान जी ਤੇ मेरा बच्चा PIP ਲੈਂਦਾ ਹਾਈ ਰੇਟ ਔਰ ਡਿਸੇਬਲ ਹੈ ਵੀਲਚੇਅਰ ਬਾਉਂਡ ਹੈ जी अल्लाह से मैं ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 18600 ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੀ ਹੈ नहीं कर सकते नहीं बिल्कुल नहीं कर दी तो ਉਹਦੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਕੋਈ अकाउंट बैलेंस होना चाहिए जी कि नहीं जी इसमें स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि उसमें 18,600 की रिक्वायरमेंट नहीं है बिल्कुल नहीं है राइट मगर इतने पैसे उसका इनकम उसका जो पैसे मिलते हैं वो इतने होने चाहिए कि वो खुद का खर्चा और उसका वाइफ का खर्चा निकाल सके तो होम ऑफिस का जो एक फॉर्मूला है वो कैलकुलेट करने के लिए 115 पाउंड्स अ वीक उसको अगर मिलते हैं 115 पाउंड्स अ वीक तो वो इनफ है अगर उसको रेंट और काउंसिल टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है और उसको 115 पाउंड्स गवर्नमेंट से ये बेनिफिट्स में मिलते हैं तो वो इनफ है वो 115 पाउंड्स की जो लिमिट है ना इसमें PIP भी काउंट कर सकते हैं और इनकम सपोर्ट भी वो काउंट कर सकते हैं तो आपके बच्चे को अगर हाई रेट PIP है और उसको इनकम सपोर्ट भी मिलता होगा तो उसको पैसे मिलते होंगे रफली 170-180 पाउंड अ वीक हाँ जी वो तो मिलते हैं ना उसको पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं है पैसे इनफ है उसके कोई प्रॉब्लम नहीं है मगर अगर मैं पहले भी बात की है कि बैंक अकाउंट में जस्ट मेक श्योर कि थोड़े से पैसे है 1000 पाउंड 1500 पाउंड 2000 पाउंड इतने पैसे है उसके पास कोई रिक्वायरमेंट नहीं है मगर इट जस्ट लुक्स बेटर कि उसके पैसे आते हैं आराम से वो रह सकता है कोई रिक्वायरमेंट नहीं है मगर 1000 पाउंड 1500 पाउंड उसके बैंक में है इट्स बेटर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है बट इट्स बेटर सो फाइनेंशियल पोजीशन में सिचुएशन जो है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है इसमें बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है PIP इनकम सपोर्ट सफिशिएंट है अच्छा सर जी दूसरी बात है जो उसका हाई रेट है ना वो मेरे अकाउंट में आता है लेकिन उसके साथ उसका NI नंबर लिखा होता है तो उसके अकाउंट में मैं डायरेक्ट करा दूं या मेरे अकाउंट में ही मेरी बैंक स्टेटमेंट होम ऑफिस एक्सपेक्ट कर लेगा इसमें जो है ना जो उसका रूल्स है ना रूल्स में लिखा है कि पैसे खुद के अकाउंट में आने चाहिए रूल्स में ऐसा है प्रॉब्लम क्या है रूल्स में ऐसा होना चाहिए कि जिसको PIP मिलता है वो किसी ने उसने किसी को नॉमिनेट किया है फादर मदर को तो उसके बैंक स्टेटमेंट्स भी चल जाना चाहिए रियली तो दैट इट शुड बी एक्सेप्टेबल प्रॉब्लम क्या है कि रूल्स में ये लिखा नहीं है उसके गाइडेंस में ये लिखा नहीं है कि किसी और के बैंक स्टेटमेंट्स में अगर पैसे आते हैं तो वो एक्सेप्टेबल है इसलिए मैं आपको 100% नहीं कह सकता कि ये एक्सेप्ट करेंगे इसलिए मैं क्लाइंट्स को क्या कहता हूँ कि वाई टेक अ रिस्क वो बच्चे का अकाउंट ओपन कर दो और पैसे इसमें डाल दो क्योंकि जहाँ तक वो उसका गाइडेंस को चेंज नहीं करेंगे जहाँ तक उसको ये पॉलिसी है कि PIP वाले को हम किसी और के अकाउंट में पैसे आते हैं तो वो एक्सेप्टेबल है अनटिल दे टेल अस कि वो एक्सेप्टेबल है कोई गारंटी नहीं दे सकता कि ये एक्सेप्टेबल है अच्छा एक और रिक्वेस्ट है आप मुझे मालूम है शायद आप टीवी पे ना बताना चाहे अगर बता सकते हैं तो अपने ऑफिस का एड्रेस बता किसका सॉरी अपने दफ्तर का अपने ऑफिस का जी वो ड्यूसबरी में हमारी ऑफिस है किंग्सवेल वॉट्स सॉलिसिटर्स हम ड्यूसबरी में है इंशाल्लाह मैं अगर आपका नंबर रहने दो तो इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा हमारा एड्रेस भी Unfortunately, that takes us to the break. We'll take a short break and we'll be back in the next couple of minutes.